Okay. Okay, so guys, audio video clear? ସବୁ clear अछि? Hello, hello, hello everyone. समस्ते भलसे अछंती. Good evening. मु बहुत मस्त अछि. Thank you for asking, Gayatri. So hello everyone. I'm Sudipta Simran Ponda welcoming you all to Vedang classes powered by Vedang Institute of Technology. Late न करिकी direct start करिबा class because आजिरो questions टिके अधिक अछि and class extreme important अपन मानकर exam perspective. Okay. हाँ समस्त को प्रणाम समस्त को गुड इवनिंग तो डायरेक्ट जीवा क्वेश्चंस ऊपर को सॉरी क्वेश्चंस पूर्व दिस इज द मैंडेटरी थिंग आपण माने जदी महापैक नौचंती 3999 रे आपण माने 2 इयर्स वैलिडिटी सहित प्रिपरेशन करि परिबे हम सहित जोथरे कि आपण मानकू वन डे एग्जामिनेशन 2 इयर्स भीतर जेते भी आसीबा आपण माने कंप्लीट करि परिबे कोर्स हम सहित पेड बैच रे उत्कर्ष हो आपण माने सीजीएल बैच आरआई हो हाईकोर्ट एसओ हो सेक्रेटेरिएट एसओ हो या फिर आपनकर सेंट्रल गवर्नमेंट आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर आपण मानकर कांस्टेबल हो पीओ हो चेक कोनसी फॉरेस्टर एग्जाम सब आपण मानकर या अंडर रे पळे आसीबो. ओके वेरी गुड इवनिंग गाइस जल्दी जल्दी टिके जॉइन हे जाओ. बाकी रहिला जदि आपण माने ओडिशा सिविल सर्विस पे प्रिपरेशन करूछंती अधिकारी बैच हमें लॉन्च करिछु जोथरे कि आपण माने प्री प्लस मेंस एंड ऑप्शनल बैच नै परिबे दिस आर द रिस्पेक्टेड प्राइस ऑफ द बैचेस एंड आपनकर ड्यूरेशन अछि हियर इज द हेल्पलाइन नंबर 8280532825 को आपण माने कॉल करके क्वेरी सॉल्व करि परिबे एक्सेप्ट दैट 9124730510 ए नंबर को मते व्हाट्सएप करके क्वेरी किछि अछि तो मते जणाई परिबे. आफ्टर दैट टीचिंग एग्जामिनेशन पे भी आपण माने प्रिपरेशन करूछंती एसएसबी टीजीटी द्रोण बैच जेटीएटी प्रारंभ बैच एसएसबी टीजीटी संस्कृत पेड बैच भी अवेलेबल अछि 1499 फॉर द एसएसबी टीजीटी नो मैटर फॉर द साइंस और आर्ट्स आपण माने जोटा भी नै परिबे सेमती जेटीएटी पे आपण माने 1199 देकी परचेस करि परिबे एंड संस्कृत पेड बैच 1499 ने 8280532825 को कॉल करके क्वेरी सॉल्व करि परिबे. तो डायरेक्ट जिबा क्वेश्चन ऊपर को देखिबा कि क्वेश्चंस कोन अछि. Okay. Sorry for the inconvenience. Got a minute. The first question, आज top 40 ରୁ 45 टा क्वेश्चंस करिबा. Have patience for that. The first question आपण मान के पाखुर अछि, maybe 50 हेइ पारे हैला. तो which amendment added the 9th schedule to protect land reforms laws from judicial review. जदि हम judicial review देखुचे ताहाले एटा आपण को किए protect provide करूची. क्विक फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 और आपनकर फोर्थ अमेंडमेंट 1955 और आपण मानकर सेवेंथ अमेंडमेंट और 10th अमेंडमेंट समस्त जल्दी जल्दी आंसर दबो. ऑप्शन सब असलानी डी रे हेतिला गायत्री समस्त कर क्वेश्चन गोटे साइड रे गायत्री रे क्वेश्चन सब बेले गोटे साइड राइट आंसर हबो ऑप्शन ए 9th कोन ऑप्शन ए फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 रे हेतिला 9th शेड्यूल प्रोटेक्ट करिया पई लैंड रिफॉर्म्स एंड प्लेस हम कोन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करूची फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 रे प्रकाश थिला फोर्थ अमेंडमेंट जदी 1955 को देखिबा से आपनकर कोन ना स्केल कंपनसेशन करूची द स्केल कंपनसेशन प्रोवाइड करूची. अरे ये आपनकर फोर्थ रे पळिबो सेवेंथ अमेंडमेंट 1956 रे आस्तिला ताको हम कोन कहि परिबा सेवेंथ अमेंडमेंट को लिंग्विस्टिक बेसिस रे कोन रीऑर्गेनाइज करिछि इंडियन स्टेट मानु को ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस रे आपण माने कहि परिबे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन. देन 10th अमेंडमेंट 1961 10th अमेंडमेंट रे आपनकर कोन हेछि ना फॉर्मली इनकॉर्पोरेट हेछि कोन हेछि दादरा नगर एंड हवेली को जदी पछरे देला को अमेंडमेंट अकॉर्डिंग ताहाले मने रख दादरा
and Nagar Haveli Dadra and Nagar Haveli आपण मानकर 10th amendment according clear. Next question. So mate ko the constitutional amendment 1956 is primarily known for constitutional amendment 1956 जोटा को आपण मानकु एबे जस्ट मु कहली about what linguistic basis रे ताहाले एठी दरकार की कोन कहबा abolition of the कोन ना प्राइवेट पार्ट्स एटा आपनकर कोथिरे जीवा 26th amendment 1971 रे ये आपनकर 26th amendment रे पळेबो कोटा 1971 रे इनकॉर्पोरेट हेतिला पळाओ रिऑर्गेनाइज ऑफ द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस एबे जस्ट आपण मानकु कहली कोन कहली ना रिऑर्गेनाइज हेची स्टेट गुडा इंडिया रे लिंग्विस्टिक बेसिस रे ये आपनकर 7th amendment 1956 रे कोन ना इनकॉर्पोरेट हेतिला एतिकी जिंस मन रखियो जोथिरा आपनकर 14 टा स्टेट एंड 6 टा यूनियन टेरिटरीज हेतिला बेस्ड ऑन द लैंग्वेज कोन हेतिला ना 14 स्टेट्स 6 union territories आपनकर फास्टली हेतिला आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज गाइस इंट्रोडक्शन आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज रे कोठी हेतिला ना 42 अमेंडमेंट 1976 ये आपनकर केबे हेतिला 42nd अमेंडमेंट 1976 रे आपण माने याको रिलेट करे परिबे इन द केस ऑफ इमरजेंसी द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी 10टा ओरिजिनल ड्यूटीज आपनकर फॉर्म हेतिला फॉर द सिटीजंस जोठी एठी कहछि रिड्यूसिंग वोटिंग एज आपनकर रिड्यूस करा दिया जेतिला तो एटा आपनकर केबे ना 1989 रे को अमेंडमेंट अकॉर्डिंग पचाले 61st अमेंडमेंट अकॉर्डिंग केबे हेतिला 61st बुझ माने अमेंडमेंट आपण माने लगेइ देबे 1989 रे आपण करेटा फॉर्म हेतिला इनकॉर्पोरेट हेतिला लोअर द वोटिंग एज ऑफ द लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली केते ना 21 रु 18 को हे जाइतिला केते जदी लोअर हेछि ता माने प्रीवियसली केते थिला 21 थिला डिक्रीज हेकी केते हला ना 18 हला नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हिच अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट दादरा एंड नगर हवेली एज ए यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली जते बे क्वेश्चंस आसीबो दादरा एंड नगर हवेली गाइस आजिरो क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट अछि केही आ हेलो हाय नमस्ते करनी डायरेक्ट आसी आंसर दियो मते को इनकॉर्पोरेट हेछि कोन ना दादरा एंड नगर हवेली जते बेले आसीबा आपण कहितली कोन ना 10th को पळेइबो 10th जोठी लिखा हिथिबो सेही पाखो करत माने 1961 बोली इनकॉर्पोरेट हेथिला आपनकर दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी इंडिया रो एतिकी जिंस मन रखिबो अच्छा मते कहला 12th अमेंडमेंट आपनकर कोटा हबो जदी 10th आपनकर 1961 ता माने आपनकर कोन ना 1962 रे आपनकर 12th अमेंडमेंट हेथिला 1962 आपनकर कोन कहूची गोवा Daman and Diu this is आपनकर कोन ना इंटीग्रेटेड हेथिला फास्ट आपनकर दिस इंटीग्रेटेड गोवा हेला दामन हेला दिउ हेला इज अ यूनियन टेरिटरी फॉलोइंग द आपनकर किछि ऑपरेशन विजय आसीथिला मन रखो एथि आपनकर ऑपरेशन विजय को आपण रिलेट करि परिबे एंड एथि गोवा हेला दामन हेला दिउ हेला ये आपनकर इनकॉर्पोरेट किला देन आपनकर आफ्टर दैट गोवा आपनकर कोन ना बाहरी गला क्लियर एतिक जिंस मन रखि परिबो तापरे 14th अमेंडमेंट कोन कहूची ना पुडुचेरी फॉर्मली आपनकर फ्रेंच कॉलोनी गोवा पचाइले आपण माने कोन कहबे पोर्तुगीज फोर्सेस थिले आपनकर ये कहउतरे आपनकर पुडुचेरी रे आपनकर के थिले ना फ्रेंच माने थिले तो एटा आपनकर 14th अमेंडमेंट माने रखो अबाउट व्हाट ना पुडुचेरी जते बेले क्वेश्चन पचारिबो पोंडिचेरी सेटा को आपण माने 14th अमेंडमेंट अकॉर्डिंग गाइस रिलेट करि देबे एतिकी जिंस मन रहला 15th अमेंडमेंट हेले 1963 रे ये हेतिला एटा कोन ना जुडिशियल अमेंडमेंट 15th अमेंडमेंट 1963 को आमे कहूचे दिस इज नथिंग बट द जुडिशियल अमेंडमेंट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन मते को through which amendment was the state of the Nagaland formed with special protections under article 371A under article 371A okay तो 371A अकॉर्डिंग आपनकर कोन हिथिला ना नागालैंड आपनकर फॉर्म हिथिला बट इति पचारिछि कोन को अमेंडमेंट मते कहला 11th अमेंडमेंट 1961 रे आपन को कोन कहिथिली ना ये आपनको प्रोवाइड करिवो इलेक्शन for the president or vice president that cannot be challenged because of the vacancy of the electoral college तो एटा तो डिफरेंट थिंग हमें रिलेट करि परिबानी बट 13th अमेंडमेंट को हमें कहि परिबा 1962 रे फॉर्म हेतिला दैट इज आर्टिकल 371 अकॉर्डिंग द फैसिलिटेटेड ऑफ न्यू फॉर्मेशन ऑफ द नागालैंड एज अ स्टेट ऑफ द इंट्रोड्यूस करा जाइथिला आर्टिकल 371 अकॉर्डिंग एतिकी मन रख परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो तो मते को व्हिच अमेंडमेंट इंक्रीज द क्विक जल्दी आंसर दियो मते को व्हिच अमेंडमेंट इंक्रीज द रिटायरमेंट एज हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 अरे 60 तो थिला आगुरु
पुणी चेंज है कि 62 हे जाई एटा को अमेंडमेंट रे आपनकर चेंज हेतिला एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गाइस जल्दी जल्दी को एटा आपनकर कोन ना वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी व्हिच अमेंडमेंट इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट इंक्रीज कला केबे अरे 15th अमेंडमेंट केबे हेतिला 1963 15th अमेंडमेंट 1963 रे आपनकर इनकॉर्पोरेट हेतिला दिस अमेंडमेंट मन रहिबा हाई कोर्ट आपनकर जजेस मानकर 60 रु 62 को चेंज करा जाइथिला एंड आल्सो अलाउड द रिटायर्ड जजेस टू सीट एज अ कोन ना आपनकर एड हॉक जजेस ए एड हॉक माने कोन ना रिटायरमेंट परे भी आसी कि जजमेंट रे बसी पारिबे फॉर तांकर किछि ओपिनियन भी सेति कि इंपोर्टेंस रहिबो एटा भी आपनकर दाखल करा जाइथिला 21st अमेंडमेंट कहले कोन बुझिचो ये आपनकर 1967 हेतिला जोटा कि आपनकर ऐड करथिला कोन ना सिंधी एज द 15th लैंग्वेज ऑफ 18th शेड्यूल सिंधी आपनकर 15th लैंग्वेज भाबरे ऐड हेतिला 21st अमेंडमेंट रे एति मन रखिबो मते कहला 24th अमेंडमेंट आपनकर कोन कहूची 1971 इनकॉर्पोरेट हेतिला एंड पास करिथिला पास टू बाईपीएसए व्हाट ना आपनकर गोलोकनाथ जजमेंट ए जो गोलोकनाथ जजमेंट आपनकर कहा ऊपर देइथिला पार्लियामेंट ऊपर अफर्मेशन अब जो अफर्मेशन वर्ड आपण माने जानिथिबे अफर्म्ड दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू amend any part of the constitution the parliament रा हस्तक्षेप रहिबा बोली एठी एज अ फंडामेंटल राइट रे इंक्लूड करा जाइथिला दैट इज द 24th amendment 31st amendment कहले कोन बुझुचो ये इंक्रीज करथला द नंबर ऑफ द इलेक्टेड सीट ऑफ द लोक सभा 525 रु 545 हेतिला मते कुहा 525 सीट्स रु 545 आपनकर को केबे को अमेंडमेंट अकॉर्डिंग जदी चेंज हेतिला क्वेश्चन आसी गला ताहाले आपण मानकर आंसर हबो कोन ना 31st अमेंडमेंट अकॉर्डिंग क्लियर छाड़ो पिला को इच्छा आसो नेक्स्ट क्वेश्चंस मते को द मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया रेफर्स टू व्हिच अमेंडमेंट जदी मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस हमें पछारिबा कोन पछारिबा ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया पछारा गला ये को अमेंडमेंट रे आपनकर अलाउ अछि को अमेंडमेंट रे मेंशन अछि 44th अमेंडमेंट तो हबनी कोन हबा देखा कहलो राइट आंसर कोन होउची ना कहछि द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू व्हिच अमेंडमेंट ये को अमेंडमेंट अकॉर्डिंग हबो दैट मींस द फाउंडेशंस एंड स्ट्रक्चर कछा एठी आपन को पछारिची ताहाले क्विक लिखो आंसर कोन हबो क्विक जल्दी जल्दी अरे कहि दिली बा तमानु कहि दिली राइट आंसर कोन एठी ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट होउची 42nd अमेंडमेंट अकॉर्डिंग हम याको रिलेट करे परिबा द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द सोशलिस्ट सेक्युलरिस्ट एंड आपनकर इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल ये प्रोवाइड करूची दैट इज द 42nd अमेंडमेंट एति के क्लियर और हैविंग एनी डाउट 73rd अमेंडमेंट आपनकर कोन प्रोवाइड करूची 1992 रे इनकॉर्पोरेट हेतिला पंचायती राज जो विलेज गवर्नमेंट भाई द 11th शेड्यूल अकॉर्डिंग आपनकर पंचायती राज ओके पंचायती राज हेतिला 73rd अमेंडमेंट रे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आसो मते को व्हिच अमेंडमेंट मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो कोटा हबो मते को क्विक पावर एंड स्टेटहुड कथा पचारी देछि मते कहिला कोठी 24th अमेंडमेंट ये कोन करूची ना ये कंपल्सरी करूची फॉर द प्रेसिडेंट टू साइन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एठी तो सही आपन को पचारी छी 24th अमेंडमेंट ही एठी पचारीबो कोन ऑप्शन ए 24th अमेंडमेंट वेरी गुड सो 24th अमेंडमेंट रे आपन कोन ना आपन बाउंड्री है सेटा माने कोन दिस इज कंपल्सरी टू मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू साइन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बिना साइन आपन प्रेसिडेंट करो बिल आगु को जाई परिबो नाही देन 25th अमेंडमेंट आपनकर 1971 ने कोन करछि ना लिमिटेड कर देछि प्रॉपर्टी राइट को टू हेल्प द स्टेट इंप्लीमेंट सोशल वेलफेयर आपनकर जेते रहिछि पॉलिसीज ताको लिमिटेड कर देछि आपनकर 25th ता लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट लिखि दोछि सो दैट आपन माने बुझी पारिबे लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स गाइस 39th अमेंडमेंट कहले कोन कहउछ 39th अमेंडमेंट कोन ना पीएम कर इलेक्शन beyond the reach of the courts कोन ना try to keep the PM's election 1975 according ये हेतिला 79th amendment 1975 according हेतिला कि पीएम कर जते बेले इलेक्शन होउची ताहाले सेटा हमें कोन ना टिके सेपरेट करके रखिबा beyond the reach of the court हमें ट्राई करबा रखिबा पई 36th amendment अपन को कोन मेंशन होउची ना ऑफिशियली सिक्किम अपन को गोटे फुल फ्लेज 22nd स्टेट ऑफ इंडिया हेतिला तो सिक्किम आपनकर इंडियन स्टेट भाबरे सिक्किम आपनकर इंडियन स्टेट भाबरे को अमेंडमेंट अकॉर्डिंग मिसिथिला ना 42nd अमेंडमेंट मिसिथिला केते नंबर स्टेट हेतिला
ना 22nd स्टेट ऑफ इंडिया ये हेइथिला एति के क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहिबो एबोलिशन ऑफ हां मते को एबोलिशन ऑफ एठी कहितली प्राइवेट फोर्सेस अच्छा मते कहला एबोलिशन ऑफ द प्राइवेट फोर्सेस कोन ये कोन कहूची ऑफ द former rulers was done by which amendment abolition of the private forces of farmers rulers the former rulers को माने कोन चेंज करिथिले was done by which amendment को amendment अकॉर्डिंग हेइतिला क्विकली मते कुआ के कहि परिबो ना ऑब्वियसली अपन कर केबे ना 26th amendment अकॉर्डिंग राइट आंसर त माने कोन होची ऑप्शन बी होची 26th amendment अकॉर्डिंग ये हबो कारण 24th amendment रा अपन कर कोन ना अफर्मेंट ऑफ द पार्लियामेंट पावर टू कोन ना एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड मेड इट मैंडेटरी कि पार्लियामेंट हस्तक्षेप करि परिबो प्रेसिडेंट कठी एटा रिलेटेबल जदि 26th amendment हमें देखु छे आपण कहि परिबा फॉर्मली अबोलिश कर देछि कोन द प्राइवेट फोर्सेस एटा कोन ना जो एनुअल पेमेंट्स ए जो प्राइवेट फोर्सेस आपण माने वाटा सुनुथुबे मने मने भाबुथुबे कि एटा कोन मैम कहउसंती एटा आपण कर कोन एनुअल पेमेंट ओके एनुअल पेमेंट को अबोलिश कर देछि एंड ता बदले कोन करछि ना स्पेशलाइज्ड प्रिविलेज आपन को देछि किछि स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करिछि ऑफ द फॉर्मर रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट मानु को हैला एंड 28th amendment कोन कहउछि मते कुआ एथि आपनकर अबोलिश कर दी द स्पेशल प्रिविलेज ऑफ द ICS माने आपनकर जेते इंडियन सिविल सर्विसेस हमर ऑफिसर्स माने अछंती से मानकर जो प्रिविलेज से माने कोन एक्सपीरियंस करूथिले किछि प्रिविलेज पाउथिले किछि एक्स्ट्रा फैसिलिटीज पाउथिले सेटा को अबोलिश करि देछि सो abolished mane rakho abolished ICS privilege eta important guys again कहूची 28th important then रहची 30th कहले कोन बुझुछो ना change हेची the basis of appealing the civil cases to the supreme court ये shifting हेची from the monetary value to the substantial question of law को एति की जिनसा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहबा remove special status yes guys next question mate ko which amendment gave Sikkim the status of a full fledged state of the Indian Union quick जल्दी मते यार आंसर दियो बहुत स्लो जाउची जल्दी आंसर दियो जिबा मते को which amendment gave Sikkim विषय ऑलरेडी मु तमे को कहि साइथली Sikkim अपन कर कोठी हबो क्विक Sikkim कोठी हबो 1975 36th amendment 1975 रे एलिवेट हेतिला Sikkim to the status of the full fledged 22nd अपन कर कोन ना स्टेट ऑफ इंडिया 36th भाबरे आपनकर हेतिला 37th amendment रे कोन करूची ना प्रोवाइड फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स फॉर द यूनियन टेरिटरी रे लाइक आपनकर कोन कहि परिबा अरुणाचल प्रदेश मिनिस्टर्स फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश रे फर्स्ट अमेंडमेंट हेतिला क्लियर 38th amendment कहले कोन बुझुचो ना डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट not justiciable so it could not be challenged in the court that means jete bele apanकर कोनोसी इमरजेंसी आसीबो एटा को प्रेसिडेंट ही apanकर कोन अनाउंस करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चंस मते कुआ द वर्ड्स सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय एटा भी मु कहि सारलेनी ऑलरेडी कहि सारलेनी विवेक रोहित किशोर लिसा सावित्री जल्दी आंसर यार मते दरकार क्विक प्रीएम्बल एडिशंस आपनकर हेची केबे हेची ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट अकॉर्डिंग आपनकर कोन ना नो द मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस हमें कहा को कहूचे ना 42nd अमेंडमेंट को एंड इट ऐड करूची कोन ना सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल 44th अमेंडमेंट कहले कोन बुझुचो ना ये आपनकर मेनी इमरजेंसीज एरा रे आपनकर चेंजेस आसीची मोस्ट हमें कहि परिबा नोटेबली कोन होईची ना ये आपनकर राइट टू प्रॉपर्टी इनटू ए लीगल राइट रे चेंज कर देची एंड स्टैंडर्ड करिची कोन ना इमरजेंसी रो सेफ गार्ड को तो राइट टू प्रॉपर्टी आपनकर को अमेंडमेंट अकॉर्डिंग ऐड होईची ताहाले मने रखो राइट टू प्रॉपर्टी आपनकर 44th अमेंडमेंट अकॉर्डिंग ऐड होईची 46th अमेंडमेंट कहले कोन बुझुचो 46 कहले कोन ना वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स ये आपनकर वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स को बुझेबो 46th अमेंडमेंट केते आवर आपण माने वर्क करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चंस मते गुआ अगेन कहूची कि आपण माने वन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करू छथि ताले 4000 देके आपण माने 2 इयर्स वैलिडिटी सहित महापैक को एनरोल करंतु जोथि आपण मानकर सब वन एग्जामिनेशन कवर अप हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चंस मते गुआ fundamental duties were added to the constitution on the recommendation of which committee को committee according हबो quick fundamental duties and committees कौन हबो क्विकली कुआ देखो वर्मा कमिटी आपनकर कोन करूची दिस वाज अ कमिटी अपॉइंटेड to identify the existence of the legal provisions for the implementing what
ना द some fundamental rights को आपनकर कोन ना duties को implement करिबा लागि but एठी आपनकर पचाची fundamental duties were added to the constitution of the recommendation कथा पचाची ताहाले आपनकर स्वरण सिंह कमिटी ऑप्शन बी स्वरण सिंह कमिटी केबे ना 1976 रे वेरी गुड गाइस स्वरण सिंह कमिटी 1976 रे recommended the inclusion of a separate chapter of the fundamental duties based on what the 42nd amendment added 10 duties to the constitutions एति कि मन रहिबो एठी मते कहले जे सरकारिया कमिशन आपनकर कोन करथिला सरकारिया कमिशन आपनकर कोन करथिला ना ये आपनकर सेंटर स्टेट रिलेशन को मेंटेन करूथिला रेकमेंड करूथिला सम चेंजेस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन करूथिला पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट सेंटर एंड स्टेट मन रख सेंटर एंड स्टेट भीतर आपनकर पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू नेकी रिलेशन केमती मेंटेन करा जिवो को केसेस रे एटा को आपनकर टोटल हैंडल करूथला सरकारिया कमिशन देन आपनकर बलवंत राय मेहता कमिटी केबे 1957 ये बहुत पूर्वरु 1957 आपण माने कहि परिबे नोन एज द फादर ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया तो ए जो बलवंत राय मेहता कमिटी को हमें कोन कहूचे ना ये आपनकर रेकमेंड करिथिला थ्री टायर डेमोक्रेटिक आपनकर डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम तो थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम आपनकर फर्स्ट इंट्रोड्यूस करथिला सो दैट हमें कहि परुचे फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम this was what na balwant rai mehta committee keep it in your mind next questions mate ko which amendment restored the term of the Lok Sabha and state assemblies to 5 years from 6 years तो 5 वर्ष रु कोई चेंज करके केते कला ना 6 वर्ष कर देला ओके तो 5 वर्ष रु 6 वर्ष कर देला ये को अकॉर्डिंग मते की कहि परिबो क्विकली की कहि परिबो देखो 42nd अमेंडमेंट तो मान को कोन कहिदिली राइट आंसर एक्चुअली 44th अमेंडमेंट ओके ताकू छाड़ दियो मते को 42nd अमेंडमेंट कोन कहिदिली during the emergency the amendment increased the term of Lok Sabha and state assembly to 5 to 6 year आपनकर 42nd रे हेतिला बट आपनकर 44th रे कोन करिछि ना 44th रे रिस्टोर करिछि द ओरिजिनल टर्म ऑफ 5 years from Lok Sabha and state legislative assembly this was the 44th amendment हैला एटा आपनकर रिस्टोर कथा पचारिछि तो रिस्टोर आपनकर from 6 year 5 to 6 हेतिला पुनी 6 to 5 को कन्वर्ट करिछि आपनकर 44th amendment एति के क्लियर हे जिवो क्लियर तो कोन आज पिला सब कोडे जाइछंती आ by which amendment was the right to property removed from the list of fundamental rights right to property आपनकर रिमूव हेछि fundamental rights रु by what मते किए कहि परिबो क्विक देखो जते बेले कहछि 40th amendment कोन कहछि ना 40th amendment 1976 रे empowered हेथिला parliament to specify like हमें कहि परिबा from time to time some limits आपनकर territorial units मान को देबा लागि but एठी पचारिछि कोन the right to property आपन माने को ऑलरेडी मु कहि साछि right to property असली कोन ना 44th amendment को जिबे ऑप्शन सी 44th amendment को जंप करिवे fundamental rights article 19 and 31 रे आपनकर मेंशन अछि from made it a legal right under the article 300A हैला एति कि जिंस मन रखिबो नेक्स्ट क्वेश्चंस मते कुओ in the 44th amendment the word internal disturbance for national emergency was replaced by ये आपनकर national माने internal किछि disturbance पाई national emergency आपनकर क्लेम करी हबनी एटा रिप्लेस कर दिया गला तो याकू मते कुओ को अकॉर्डिंग रिप्लेस करा जाईछि मते कुओ दैट इज आर्म्ड रेबेलियन द्वारा हेसी सिविल अनरेस्ट फॉरेन अटैक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन देखो सिविल अनरेस्ट तो हेइनी फॉरेन अटैक पाई हेइनी दीटा जाक हेइ परिबो कोन हमें आर्म्ड रेबेलियन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन एठी पचाछि द 44th amendment the word internal disturbance for national emergency was replaced कर दिया जाछि कोउथरे ना as armed rebellion रे as both नहीं armed rebellion रे both वाला ऑप्शन अछि कि तो 44th ये आपन 1978 रे करा गला काना 1975 रे आपन कोन इमरजेंसी लगैथिले इंदिरा गांधी मैडम तो यांकु रिप्लेस करथला 1978 रे कि नेशनल इंटरनल इमरजेंसी नारा गुटे जिंस किछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन भीतर रहिबो नाही तो ताकू चेंज कर दिया गला आर्म्ड रेबेलियन रे एति कि जिंस बुझा पडुछि ना नाही म देखो क्लियर चलो नेक्स्ट एठी जो सिविल अनरेस्ट कहउछि ता माने कोन जदि कॉमन टर्म रे भी देखिबा पॉलिटी टर्म में देखिबा इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड एक्ट ओके जेटा उटे नॉर्मल टर्म हमें कहि परिबा नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करिबा क्लियर नेक्स्ट चलो मते को व्हिच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड दैट the president can send the advice of the council of minister back for reconsideration once
कौन कहछि को अमेंडमेंट अकॉर्डिंग आइडेंटिटी पचारछि दैट मींस प्रेसिडेंशियल पावर कथाटी पचारछि रिकंसीडरेशन माने को प्रेसिडेंशियल पावर तो प्रेसिडेंशियल पावर असले आपण माने कोठी की पळेबे ना 44th amendment 1978 रे it added a second balance by allowing the president to send advice that was for the reconsideration to the cabinet ठीक जिंस हेई परिबो माने if the cabinet आपनकर किछि जिंस आपनकर माने व्यू पय पठेचंदी परमिशन पय पठेचंदी प्रेसिडेंट को पाखरु से पुनी जदी किछि कंसीडर कले कि ना एथरे किछि मिस्टेक्स अछि आकु पुन करे रीवेरीफाई करो ताहाले से पुनी वापस सेंड करि पारिबे एतिकी पावर आपनकर प्रोवाइड करा दैछि का ना प्रेसिडेंट को पाखरे प्रेसिडेंट हमर हर्ता करता दैव विधाता राइट तो 50th अमेंडमेंट आपनकर कोन कहउछि ना एम्पावर्ड करिछि पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट करिछि फंडामेंटल राइट माने को टू पर्सन एम्प्लॉयड इन द कोन ना इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस कोन ना पर्सन्स हैविंग ए जॉब इन द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन लाइक द आईबी ओके द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ए मानकर जो माने जॉब करछंती तांको फॉर द आर्म्ड फोर्स आपनकर और द इंटेलिजेंस रे जो माने जॉब करछंती से माने को इथरे रिस्टोर करूछि 58 रे आपनकर कोन ये आपनकर 1987 ने 58th अमेंडमेंट आसीतिला एंड 58th अमेंडमेंट रे कोन कहउछि ना ये प्रोवाइड करूछि फॉर द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी एंड गिव इन द सेम लीगल वैलिडिटी एज द इंग्लिश वाज हैव तो हिंदी को आपनकर कोन हिंदी को आपनकर स्पेशल प्रोविजन मिलिछि 58th अमेंडमेंट रे कोदरे ना टेक्स्ट रे हमें ताको एक्सेप्ट करिछि आवर नेशनल लैंग्वेज नुआ आपनकर कोन ता आपनकर हिंदी एज अ क्विकली को राष्ट्रीय भाषा ओके नेक्स्ट चलो मते को the anti-defection law was introduced by which amendment एठे anti-defection law कथा पचरला anti-defection law कहिला आपण माने कोन बुझिबे ये को अमेंडमेंट अकॉर्डिंग आई सेछि 51st अमेंडमेंट आपनकर हेतिला 1984 रे ये प्रोवाइड करछु कोन ना रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑफ द लोक सभा कोन ना एसटीज मेघालय हेला अरुणाचल प्रदेश हेला नागालैंड हेला मिजोरम हेला सेवन सिस्टर मान को पाखरु पळेबो तो सेवन सिस्टर पाखरे आपनकर एसटी सीट को रिजर्व करूची किए ना 51st अमेंडमेंट आपन मान को लिखि दोची सेवन सिस्टर्स एंड एथरे रिलेटेड करे परिबे आपन माने काहाकू ना ये 1984 रे आगे आसीतिला फर्स्ट आपनकर कोन ना लोकसभा रे सीट लोकसभा रो सीट फॉर एसटी कम्युनिटी रिजर्वेशन 42nd अमेंडमेंट कोन कहूची आयाराम गयाराम हाँ 42nd अमेंडमेंट कौन कहूची 42nd अमेंडमेंट ही कहूची पॉपुलरली नोन एज व्हाट एंटी-डिफेक्शन लॉ इट एडेड इन द 10th schedule to disqualify the members of the parliament or the state legislative who defect कोन जो माने चेंज करिवे पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड सपोज आपण माने बीजेपी रो स्टैंड करचंदी एंड यू हैव बीन इलेक्टेड फॉर द पोस्ट एंड आपण माने आफ्टर इलेक्शन चेंज करूछंदी कि ना मु तो चूज करूची काहाकू ना कांग्रेस इन दैट केस आपण माने को कोन सेथिरो कोन बहिष्कृत करा जाई पारिबो एतिकी जिंस बुझी पारलो 53rd अमेंडमेंट आपनकर कोन प्रोवाइड करूची 1968 रे हितिला ये आपनकर स्टेटहुड ऑन द मिजोरम कथा आसीबो स्टेटहुड कथा पचारिबो जदी आपण माने डायरेक्टली आंसर देबे 53rd अमेंडमेंट 1986 रे फॉर्म हेतला अंडर द आर्टिकल ये पड़ेबो केते 371 मिजोरम जी 371 जी अंडर ये पड़े आसीबो 61st अमेंडमेंट कहले कोन बुझिबो ना लोयर द वोटिंग एज आपण माने को स्टार्टिंग रे क्वेश्चन थिला केते वोटिंग एज 21 टू 18 आपण कर वोटिंग एज हेची लोयर हेची 61st अमेंडमेंट अकॉर्डिंग क्लियर नेक्स्ट स्पीड हे जाउची कि रे मते को स्पीड हे जाउची कि मते को व्हिच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 इयर्स टू 18 इयर्स एबे ही तो कहिली 21 रु आपण कर 18 हेला 21 रु 18 हेला कोन ना 61st अमेंडमेंट भाबीबार किछि अछि कि भाबीबार किछि अछि आ 61st अपन अमेंडमेंट अकॉर्डिंग आपण कर ये हे जे 62nd अमेंडमेंट आपण कर 1989 ने फॉर्म हेतिला ये कोन करछि एक्सटेंड करछि द रिजर्वेशन ऑफ द सीट आपनकर सॉरी रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द एससी एंड एसटीज कोठी ना लोकसभा रे एंड स्टेट असेंबली रे फॉर अनदर 10 इयर्स अंटिल आपनकर कोन 2000 पर्यंत ये प्रेजेंट थिला सो हमें कहि परिबा एटी एससी एंड एसटी सीट्स कथा कहिची सीट्स रिजर्वेशन कथा कहिची 65th अमेंडमेंट कहले कोन बुझुछ क्विकली कुह एस्टैब्लिश करिछि नेशनल कमिशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज मल्टी मेंबर हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से मानकर प्रेजेंस निहाती कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिबो निहाती पार्लियामेंट रे रहिबो तो 65th अमेंडमेंट अकॉर्डिंग नेशनल कमिशन बठे बसेछि कोन नेशनल कमिशन फॉर एससी एसटी बुझिला
ओई मते कुह स्पीड हे जाउची कि 69th अमेंडमेंट 69th अमेंडमेंट अच्छा डिस्टेंस बाय टाइम करूछ हो आसो 69th अमेंडमेंट आपण मानकु कोन कहूची मने पकाओ आसो नेक्स्ट क्लास देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन से 69th आपनकर अछि महापेक आपण मानकर अगेन कहूची 3999 आपण माने परिबे 2 इयर्स वैलिडिटी सहित एंड 2 इयर्स भीतर आपण मानकर जेते वन डे एग्जामिनेशन आसुची आपण माने टोटल फुल फंडामेंटल क्लास आपण माने हमठो प्रोवाइडेड हे परिबे नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चंस आसो तो भाबी दे अधा पळे असलेनी हां ड्यू टाइम रे अधा पहुंच जाईची आसो Which amendment granted the national capital territory status to Delhi? Guys, Delhi को मिली national capital territory. तो ये जो amendment को amendment according इटा पाई थी बे guess करी की कहिलो को amendment quick को amendment 67th 68th 69 67th कहिले कोन बुझुछो article 356 extend करूची president's rule in Punjab due to prevailing the unrest at that time को टाइम रे 1990 रे आपण करो एटा आपण करो 1990 रे पंजाब पाई लिखि दोची सो दैट आपण माने रिलेट करै परिबे पंजाब पाई क्रिएट हेतिला 68th अमेंडमेंट केबे हेतिला 1991 रे फर्दर एक्सटेंड ऑफ द कोन ना प्रेसिडेंट रूल पूरी पंजाब एटा एठी आपण प्रेसिडेंट रूल लागितिला 68th अमेंडमेंट रे आपण कर पूरी प्रेसिडेंट रूल लागितिला पंजाब रे एटा मन परिबो केते वर्ष पाई ना टोटल 5 इयर्स पाई टोटल 5 इयर्स पाई आपण कर पंजाब रे प्रेसिडेंट रूल लागि जाइतिला एते की जिंसा मने रखि था एंड बट एठी कहची 69th अमेंडमेंट ये पळे आसला 1991 according to the status of the national capital territory जोटा हम NCT बोली कहूचे to Delhi and provided for a 70-meter legislative assembly and a 7 member of the council of members आपनकर constitute होउची कोठी ना आपनकर दिल्ली रे according to the 69th amendment एटा क्लियर तो हां रोहित राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस मते कहिबो The 73rd amendment जोटा कि 1992 कथा कहिछि तो 73rd amendment 1992 को कोन बुझी परिबो is related to the municipalities ताको हम रिलेट करै बाकी municipalities कहिले 74th municipalities कहिले 74th 1992 73rd नहीं हो ना तो नेक्स्ट होगी 73rd पचले कोन कहि परिबो ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तो 73rd amendment 1992 gave a constitutional status to the panchayats and it added to the part 9 of 11th schedule एति के मन रख परिबो लैंड रिफॉर्म हेले ये आपनकर कोठी मेंशन अछि ना फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 फर्स्ट क्वेश्चन को पढाओ ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 रे हेतिला दैट इज द लैंड रिफॉर्म्स ट्राइबल एरियाज को अपन मानकर को अमेंडमेंट रे पळेबो ये आपनकर 5th थ्रू 6th शेड्यूल को पळेबो 22nd अमेंडमेंट एटा टिके चेक कर दो 21st और 22nd अमेंडमेंट एज आई थिंक एटा को टिके गाइस डबल क्रॉस डबल चेक करि दबो हैला नेक्स्ट क्वेश्चंस मते कुहो व्हिच अमेंडमेंट एडेड द 12th शेड्यूल को अमेंडमेंट आपनकर ऐड करिवो मते कुहो व्हिच अमेंडमेंट एडेड द 12th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 12th शेड्यूल आपनकर ऐड करिछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने को अमेंडमेंट अकॉर्डिंग दैट मींस हमें कहि परिबा कि 12th शेड्यूल असला माने कोन 12th शेड्यूल असला माने कोन अर्बन लोकल बॉडी समान को यूएलबीएस ऑलरेडी क्लास रे कहछि अर्बन लोकल बॉडीज असले 12th शेड्यूल बट एठी कोन पछरिछि मते को 71st अमेंडमेंट हबो 72nd अमेंडमेंट हबो 73rd और 74th जेते बेले त मानकू कहिछि अर्बन लोकल बॉडीज आसीबो आपण माने आखिकान बंद करी कि डी को जीवो 74th अमेंडमेंट को पार्ट 9 ए रे ये मेंशन हेछि हरा नै मते को जोदे आपण कर को ना ऑलमोस्ट कंटेन करूछि 18 टा फंक्शनल आइटम्स फॉर द अर्बन बॉडीज हैला चलो नेक्स्ट मते को व्हिच अमेंडमेंट एडेड कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली टू द 8th शेड्यूल गाइस 8th शेड्यूल रे आपनकर कोंकणी मणिपुरी ए सब ऐड हेछि तो ये आपनकर को अकॉर्डिंग हबो मते को अकॉर्डिंग 21st अमेंडमेंट जोटा कहूछि आपण मानकर 1967 ने 21st अरे सेटा 22nd ठीक थिला कारण 21st अमेंडमेंट रे आपनकर सिंधी ऐड हेतिला 15th लैंग्वेज बोली डिस्कस करिथिली सिंधी ऐड हेतिला आपनकर सिंधी ऐड हेतिला एज अ 15th लैंग्वेज बोली 21st अमेंडमेंट रे मेंशन करा जायछि राइट और रॉन्ग तो एठी क्वेश्चंस आसुची 71st अमेंडमेंट वेरी गुड तो 71st अमेंडमेंट कोन कहूची एडेड करछि कोंकणी मणिपुरी नेपाली एंड हमें कहि परिबा ताकू हम एंती मन रखिबा केएमएन कोन ना केएमएन भाबरे मन रखि देबो 71st अमेंडमेंट कहूची 1992 फॉर द केएमएन जोटा कि इंक्रीज करछि टोटल 18 टा लैंग्वेज हैला
15 रु पुणी 18 हे जाइथिला मने पडुची 92nd अमेंडमेंट कहले कोन बुझिचो 92nd अमेंडमेंट ये आपनकर को ईयर रे आसीबो ना ये आपनकर 2003 रे आसीबो 96th अमेंडमेंट केबे आसीबो ना 96 2000 ये 2011 रे आसीबो 96th अमेंडमेंट आ एथिरा आपनकर कोन हेतिला ना सब्स्टिट्यूट हे जाइथिला स्पेलिंग ऑफ ओरिया ओडिया ओडिसा ओडिसा हैला तो एटा को माने रखो ओरिया टू ओडिया आपनकर कन्वर्ट हेची 96th अमेंडमेंट जोटा कि आपनकर बहुत इंपोर्टेंट एज फॉर द ओडिशा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैला नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मते को बोडो डोगरी सांथाली एंड मैथिली वर एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय एई सब लैंग्वेज आपनकर ऐड हे जाई छी मते कहलो एटा आपनकर को अमेंडमेंट 71st को आपन एलिमिनेट कर देले एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन दैट कोंकणी हैला मणिपुरी हैला आपनकर नेपाली हैला ये आपनकर ऐड हे छी 71st अमेंडमेंट 1992 रे हना नाही तो ताको हम एलिमिनेट कर देले एठी रहची 92nd अमेंडमेंट ताको हम कहि परिबा कि 2003 रे 92nd अमेंडमेंट आसी छी जथरे कि ऐड करिछि फोर मोर लैंग्वेज कोन ना बोडो डोगरी मैथिली सांथाली एई मानक हमर ऐड हे छी जेते बेले आपन को 22 कहि देला एठी आपन माने बीडीएमएस को मने रखि दबो हैला बीडीएमएस को सब त माने जोडोडे बदमाश को बीडीएमएस फॉर्म रे आपन माने मन रखि देबे सो दिस ब्रॉट द टोटल नंबर ऑफ केते हे गला ना से पर्यंत आपन कर कोन 92 पर्यंत 22 टा लैंग्वेज हे गला 22 टा लैंग्वेज हे गला एति मन रखिबो 97th आपन कर केते कहितली 2011 रे आपन 97th अमेंडमेंट आसीथिला ये आपन कर एडेड कोन करिथिला ना किछि ऑपरेटिव सोसाइटीज टू द फंडामेंटल राइट्स टू फॉर्म द कोन एसोसिएशंस आर्टिकल 19 अकॉर्डिंगली आपन कर ऐड करिथिला 100th अमेंडमेंट पूरा राउंड फिगर कोन हेतिला कहलो ये आपनकर 2015 रे माने मोदी सरकार ये अमेंडमेंट आनिथिले तो 100th अमेंडमेंट आपनकर कोन हेतिला ना रेटिफाई हेतिला कोन रेटिफाई हबो ना लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जोटा को हमें एलबीए बोली जानचे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आपनकर रेटिफाई हेतिला 100th अमेंडमेंट रे जोटा कोदरे बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश जदी पतारिबो एलबीए आपनकर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कोठी रेटिफाई हेछि बिटवीन व्हाट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश मन रख परिबती की क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ओके द 86th अमेंडमेंट 2002 रे हेतिला गाइस 86th अमेंडमेंट आपनकर 2002 रे हेतिला इंसर्टेड करथिला व्हिच आर्टिकल एट द फंडामेंटल राइट मते कहला 2002 रे 86th अमेंडमेंट ऑलरेडी मु डिस्कस करि सारछि आर्टिकल 19 हबो की मते को हबो की ये आपनकर एग्जिस्ट भी करू नथला डजंट एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन fundamental rights under the article 19 are categorized from the 191A ru 191G पर्यंत आपनकर फंडामेंटल राइट ओवर हे जाउची हना नै मते को तो ऑब्वियसली राइट कोन हबो 21A ही हबो बिकॉज़ ये अमेंडमेंट करूची राइट टू एजुकेशन एंड द फंडामेंटल राइट टू द चिल्ड्रन एज 16 टू 14 एज पर्यंत हना नै मते को मते एंड एथरे आपनकर आहुरी मेंशन होची कोन होची ना इट आल्सो चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 जोटा कि आपनकर डीपीएसपी एंड एडेड टू द 11th शेड्यूल जोथरे हमें जानचे ड्यूटी अंडर द आर्टिकल 51A तो एठी हमें मेंशन करि परिबा ए जो 51A रहिची ये आपनकर अंडर आर्टिकल 45 डीपीएसपी को भी धरि की चालुची हना नै मते को एते कि जिंस 31C कहले कोन कहि परिबा आर्टिकल 250 सॉरी कौन होला 31C 25th अमेंडमेंट अकॉर्डिंग गाइस 31C पळे आसीबो एति कि समन राख परिबो जे कि प्रोटेक्ट करूची काहाकू ना लॉज एम टू द इंप्लीमेंटिंग सर्टेन कोन आपनकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड बीइंग चैलेंज इन द कोर्ट सो जे कोनसी आपनकर डीपीएसपी जदी कोर्ट रे चैलेंज करा गला दैट इज अंडर द आर्टिकल 31C रहिबो फ्री एंड कंपलसरी रोहित कहूची स्लो करिया पे अरे बाप रे हो आसो जॉब को पाइला पर पिला क्लास भी करूछन हेतरे पुनी स्लो ना रोहित हो स्लो कली अरे कारण बहुत सारा क्वेश्चंस आनी छी मु काहे की स्पीड करे काहे की स्लो पढाई तमन को डेली क्लास रे बिकॉज़ मु जानि छी मो परे क्लास न थाए मु जते टाइम जाय क्लास नै परिबी एबे मो परे भी क्लास रहउची तो एटा मो माने पैनिक सिचुएशन आसी छी केते टाइम भीतर मते क्वेश्चन सारी बेर अछि आसो तो मते को व्हिच अमेंडमेंट सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड ओडिया टू ओडिया इन द 8th शेड्यूल एटा मु तमन कहितली कोन ओडिया टू ओडिया हेतिला आपण माने कर केबे हेतिला 94th अमेंडमेंट तो बिल्कुल हे नथिला केते रे हेतिला आपण माने कर क्विक 2011 रे हेतिला 96th अमेंडमेंट 2011 रे हमें कहि परिबा कि ओडिया टू ओडिया हेतिला ओडिसा टू ओडिसा हेतिला हो ना चलो नेक्स्ट
मते को 97th constitutional amendment 97th constitutional amendment 2011 gave constitutional status to what कहा को प्रोवाइड करिछि क्विकली किए मते कहि परिबो कोऑपरेटिव सोसाइटीज 97th amendment कोऑपरेटिव सोसाइटीज मने पडुछि ना नहीं कोऑपरेटिव वेरी गुड सब तो घोषि दै छले सब तो भलो भलो आंसर दोछ देखिबा एग्जाम रे थरा केते मार्क रखुछ हां तो चलो नेशनल कमिशन फॉर बीसी कोन कहूची ग्रांट करूछ आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय द 102nd माने 102 नंबर अमेंडमेंट 102 हेले 2018 रे से आपनकर 2018 रे अंडर आर्टिकल केते ना 330 बी ये 102 सेकंड अमेंडमेंट रे आपनकर हेतिला अंडर आर्टिकल केते पचारिबो जदि आर्टिकल पचारला 330 बी रे आपनकर ये आसीथिला सॉरी 338 बी 338 बी रे आपनकर आसीथिला नेक्स्ट क्वेश्चन चलो तो 97th Constitutional Amendment Act 2011 ने gave the constitutional status and protection to cooperative societies. Next question. Very good evening लिसु बहुत जल्दी आसला देखि खुशी लागिला. The National Judicial Appointments Commission. The National Judicial Appointment Commission was established by which amendment? जल्दी. को amendment according guys ये हेची national quick. तो हम NJSCB कहू छे तो ताकू आपनकर को अमेंडमेंट 98th अमेंडमेंट रे हेछि की जल्दी कुआ 90 वेरी गुड ऑप्शन बी 99th अमेंडमेंट अकॉर्डिंग ये हेछि समस्त को गुड इवनिंग काहे केते जल्दी आसु सब काहे केते जल्दी क्लास को आसु आ 10-15 मिनिट गले क्लास सरले आसीबनी 15 मिनिट जाऊ क्लास सरले आसीबो आस तो 100th अमेंडमेंट कोन कहिदिली 100 और 100 तमन को कहिदिली हना नहीं आउ रिपीट करबिनी टाइम वेस्ट करबानी चला नेक्स्ट व्हिच अमेंडमेंट रेटिफाइड द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट अरे रेटिफाई हे जाई लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एटा तो माने रिलेट करै परिबो रेटिफाई हे जाई लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट क्विक 99th अपन करो कोन कहूची ना रिलेटेड टू द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स ये अपन करो प्रीवियस क्वेश्चंस रे कहली रिलेटेड टू द अपन कर कोन ना एलजेएससी सहित रिलेट करेबे जुडिशियल अपॉइंटमेंट सहित को रिलेट करेबे तो 100th अमेंडमेंट रे अपन कर कोन हैला मोदी सरकार करथले 2015 मसिया रे रेटिफाई करथले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश एति की जिंसा मन रही परिबो यस अच्छा 101 रे अपन कर कोन हेतिला 101 अमेंडमेंट रे कोन हेतिला एई तो छडो एठी कोन हेतिला ना इंट्रोड्यूस हेतिला कोन समस्त कर शत्रु जीएसटी तो 101st अमेंडमेंट रे आपण कर जीएसटी इंट्रोड्यूस हेतिला ताकू तो मन को मन रखै पड़िबो 102nd अमेंडमेंट रे कोन हेतिला ना ये तो 2018 हेतिला ग्रांटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस of the National Commission of the Backward Classes that means आपण कर NCBC केबे 2018 रे एटा इनकॉर्पोरेट हेतिला एतिक मन रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चंस मते को अच्छा अगेन कहूची महापेक्र प्राइस आपण कर 4000 2 इयर्स वैलिडिटी जो माने आपण माने चाहू जंदी जे नेबा लागि बैच आपण माने जॉइन हेई परिबे विथ दिस अमाउंट एंड एतिकी सब बैचेस आपण को प्रोवाइडेड मिलिबो क्लियर नेक्स्ट तो अगेन कहूची गाइस ओडिसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पई आपण माने अधिकारी बैच नै परिबे ओसीएस प्री प्लस मेंस आपण मानकर ओनली मेंस ओनली प्री सब कोर्सेस हम पाखे अवेलेबल अछि ओके आफ्टर दैट टीचिंग एग्जामिनेशन पई आपण माने एसएसपी टीजीटी नै परिबे जेटीएटी नै परिबे संस्कृत पेड क्लास नेबे ये भी प्रोवाइडेड अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन मते को गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जीएसटी ग्रुप पड़े आसले ना कोन ग्रे थैंक यू कहलानी क्लास सॉरी नी ओय पंडित एंड पंडितिस क्लास सॉरी नी रे आसो मते को गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड भाया व्हिच अमेंडमेंट तो जीएसटी आपनकर टैक्स कहिथिली एबे 101 रे हेतिला 101 हेतिला को मसिया रे हेतिला 101 अमेंडमेंट 2016 रे हेतिला 2016 रे काना 100th आपनको लैंड बाउंड्री एक्ट कहिदेली एलबीए 101 आपनकर 2016 रे हेतिला राइट तो 103 हेतिला 16 रे हेतिला आपनकर वैट सब लागिथिला 16 103 कहले कोन बुझुछो 103 अमेंडमेंट 2019 रे आसीथिला ये आपनकर 10% रिजर्वेशन आनथिला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ईडब्ल्यूएस आपनकर हायर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब रे आपनकर ईडब्ल्यूएस सेक्शन जो नाही कि ईडब्ल्यूएस सेक्शन रे 10% रिजर्वेशन आनीथिला ओके एटा आपनकर 2018 रे ये आपनकर 2018 रे गाइस 18 ना 19
एटा टिके चेक करलो 18 ना 19 18 ना 19 एटा टिके चेक कर दबो हैला देन 105th अमेंडमेंट रे कोन कहितिला ये आपनकर 105th आसीतिला 2021 रे 105th रे स्पेशलिटी कोन जानिचो एसीबीसी आपनकर आसी जाईची माने सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को हमें देखुचे socially and educationally backward classes रे हमें रिलेट करूचे restore the power of the state government to identify the special group of the socially and educationally backward classes ACBC एते की जिनसा क्लियर क्लास छाड़ी की सब गायब कोन आ तमनु कहिबी छाड़ा क्लास मबे केडी सांकर जति की दिन 11 रे क्लास रे हम बंद कर दूची क्लास the 102nd amendment act 2018 is related to the 102nd amendment act 2018 आपनकर कोन बिलोंग करूची एबे कहली आपनकर एसीबीसी देखिबा कोन कहउछ क्विक सॉरी एसीबीसी ना एनसीबीसी गाइस एनसीबीसी constitutional status to the national commission for backward classes एटा इकोनॉमिकली नाही एजुकेशनली नाही ये आपनकर बैकवर्ड क्लासेस हे जीवो ऑप्शन बी 33 आर्टिकल 338 बी अंडर ये पळे आसीबो जीएसटी काउंसिल पचारुची जदि आपन को जीएसटी काउंसिल कथा कहउची ताहाले कोन करबो नाही एस्टैब्लिश करबो वाया द 101st अमेंडमेंट 2016 रे हेतिला नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मते को 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वाज प्रोवाइडेड बाय ये आपन को कोठी एबे कहली बा 10% कहले कोठी प्रोवाइड हबो 101 आपन को जीएसटी होला नाही 102 आपन को रिलेटेड टू द एनसीबीसी एई अकॉर्डिंग एलिमिनेशन प्रोसेस रे भी जदी जीवो 103 रे जाई की ठाकीबो 103 रे जाई की ठाकीबो होला नाही क्लास टाइमिंग सिकान तमे जानि न कि डेली 10 टा 11 क्लास होची ना डेली 10 टा क्लास टा 10 टा 11 क्लास होची बा चलो 104 कहले कोन बुझिछो फोकस ऑन द एससी एसटी एंड तर सीट एक्सटेंशन कोथरे एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन जिते बेले थिला एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन रे आपण माने कर एससी एसटी माने कर दबदबा थिला 104 रे नेक्स्ट चलो मते को व्हिच अमेंडमेंट abolished the nomination of Anglo Indians to the Lok Sabha state assembly तो Lok Sabha state assembly को आपण कर कोन आसीबो abolition of the Anglo Indian nomination guys quick abolition of the abolition आसुची पा 104 को आसुची एई पा आसिला व्हिच अमेंडमेंट abolish the nomination of the Anglo Indian Lok Sabha and एटा आपनकर 104th अमेंडमेंट एटा आपनकर 104th रे abolish થઈ जाईची बुझी पारलो के पचरथला 104 बुझा पड़िला तो एटा आपनकर एक्सटेंड करा जाईची द रिजर्वेशन सीट ऑफ द SC and STs in the Lok Sabha and state assembly for another 10 years time and if discontinue कर दिया जाय छि कहा को द स्पेशल नॉमिनेशन प्रोसेस थिला एंग्लो इंडियंस मानकर लोक सभा रे राज्य सभा रे सेटर आपन को कोन ताको बेदखल कर दिया जाय छि 105th आपनकर कोन करूछि ना ये क्लैरिफाई करिछि कोन क्लैरिफाई करछि ना दैट स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू आइडेंटिफाई देयर ओन लिस्ट ऑफ सोशली एंड आपनकर जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एसीबीसी कैटेगरीज को स्टेट गवर्नमेंट ओन आइडेंटिफाई करी कि रिकॉर्ड मेंटेन करिवो एटा आपनकर 105th रे एसीबीसी रिकॉर्ड मेंटेन ओके कहा पाखरे पावर अछि ना स्टेट पाखरे होल पावर अछि बोली 105th अमेंडमेंट रे मेंशन करा जाय छि व्हाट्स अबाउट 106 2023 रे आपन 106th अमेंडमेंट आस्तिला जहा को हम जानछे नारी शक्ति कोन बंधन अभियान बोली हम जानिछे एटा आपन 33% रिजर्वेशन फॉर द कोन ना वुमेन लोक सभा रे एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थिला सो 33% रिजर्वेशन इन द लोक सभा एंड राज्य सभा को अपन माने रिलेट करै पारिबे क्लियर एते की रिलेट करैबा नेक्स्ट क्वेश्चंस मते कुह द 105th अमेंडमेंट एबे कहली 105th 104 पर 105th आसिला 104 रे एंग्लो इंडियन मानकर परमिशन को बेदखल कर दिया गला 105th रे अपन मानकर कोन हैला कुह सब गुडा ऑलरेडी रिपीट करि सारिची त मते या अकॉर्डिंग कुह कोडा हबा राइट आंसर कोन हबो क्विक पार्लियामेंट कोन करूची ना एससीबीसी लिस्ट कम्युनिटीज फॉर द एससीबीसी लिस्ट बट 105th अमेंडमेंट स्पेसिफाई करूची कोन ना रिटर्न टू द आइडेंटिफिकेशन सो हमें रिलेट कहा सहित करिबा ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट सहित रिलेट करेबा सो 105th constitutional amendment act 2021 according it was enacted to restore the power of state government and union territories to identify and notify their own list of socially and economically backward classes fine हैला next questions mate ko which amendment provided for an authoritative text of the constitutional in Hindi guys Hindi कथा पड़े आसिला that means as a English आपन पर टेक्स्ट हमर हिंदी रे भी मेंशन करा जाई परिबो जेते आपन माने
पार्लियामेंट को जानतु आपण अपर हाउस लोअर हाउस जे कोन से जगह आपण माने जानतु कैबिनेट को जानतु आपण माने कोन ना हिंदी टेक्स्ट मेंशन करि परिबे दैट इज ऑफिशियली अप्रूव्ड हैला केबे अप्रूव्ड हैला ना आपनकर 48th अमेंडमेंट हैला कारण 42nd अमेंडमेंट आपनकर एंटी डिफेक्शन लॉ कहूची एंटी डिफेक्शन लॉ आपनकर कोथरे आसुची 42nd अमेंडमेंट रे 48th अमेंडमेंट रे आपनकर अंडर आर्टिकल 39 ए रे मेंशन करा जायछि 12 रे सॉरी 21 रे मेंशन करा जायछि तो हिंदी गेव द सेम लीगल स्टैंड आपनकर को ना पावर दिया जायछि एज इंग्लिश वर्जन ओके चलो नेक्स्ट 61 रे आपनकर 18 61 ता आपनकर कोन हैला ता चेंज हेतिला वोटिंग हियर फ्रॉम 21 टू 18 आपनकर वोटिंग हियर चेंज करा जायतिला मने पडुची 65th अमेंडमेंट आपनकर 1990 रे आसीतिला जे कि क्रिएट कला कोन ना मल्टी मेंबर नेशनल कमिशन कहा पाई एसटी पाई एससी एसटी पाई 1990 रे 65th अमेंडमेंट आसीला क्लियर चलो नेक्स्ट मते कुआ which amendment limited the size of the council of ministers to 15% of the total strength of the Lok Sabha assembly तो 15% of the Lok Sabha assembly को हम रिलेट करि परिबा कहा सहित क्विक कहा सहित करे परिबा के कहबे यार आंसर 91st amendment को अकॉर्डिंग 91st amendment 2003 according guys this is possible to prevent the large कोना ना cabinets and political defection its limited size mention करा गला so 15% आपनकर total strength of the Lok Sabha state assembly रे present रहिबे and इथरे exceptions कोन करा गला in the summer आपनकर जते छोटो छोटो state रहउची in the case of smaller states the minimum number of ministers cannot be less than केते ना 12 एटा आपनकर exception रखा गला मने रखिबती की very good चलो next मते कुआ consider the following pairs of constitutional amendment याकु टिके consider करा जाऊ ओके फर्स्ट अमेंडमेंट कोन कहिची ना 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड 73rd ओके तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल बॉडीज तो या भीतर मते कहलो राइट कोन हबो मते कुआ consider the following pairs of constitutional amendment acts are their impact of the UP's government कोन हबो quick only two all four statements are correct मत तो चारटा तक देखा जाउची बट still yes तो चारटा तक स्टेटमेंट आपनकर कोन ना करेक्ट ही अछि so all four statements are correct here clear चलो next मते कुह again consider the following statements guys regarding the 86th constitutional amendment act 86th constitutional amendment act according kon कहउची statement 1 statement 2 now it added a fundamental duty relating to the provision of opportunities for education to children by parenting or guardians statement 2 कहउची it added fundamental duties relating to the safeguarding public property and promoting harmony and the spirit of brotherhood so right answer कोन एठी होबा एठी भी मते both को right देखा जाउची so option C both sorry देखी statement 1 कोन कहउची ना statement 1 it added a fundamental consider the following statements अच्छा 86th amendment रे एटा केमति possible only 2 होबो ना only 2 होबो कारण incorrect आपनकर कोन होउची statement 2 incorrect ही जाउची because ये आपनकर right होउची because the fundamental duties relating to the safeguard that is under article 51A हैला article 1976 रे मेंशन है not in the 19 एटा आपनकर 42nd constitutional amendment according not 86th हैला only one yes only one statement 1 is correct but statement 2 is incorrect next चलो मते को in which year was the first amendment to the constitution of India made first amendment आपनकर constitution of India केबे हेतिला quick जल्दी के कहबे यार आंसर give me the right answer guys jaldi
अरे चार्ज सरी जाइथिला रुहो टिके काहे एमदी होजो एते जोरे चिलेली तो से माइक ऑफ हे चार्ज सरी जाइथिला चिल्लाओनी कुल 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 म्यूट नाही रे चार्ज सरी जाइथिला आसा तो राइट आंसर कोन होची फंडामेंटल ड्यूटीज आपण मानकर ऐड हेछि कोथिरे फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट आसा the fundamental duties of the citizens were added to the constitution of India by the 42nd amendment act 1976 based on the Swaran Singh committee's recommendation मने रहिबा एतिकी चिल्लेइबा हम फंडामेंटल राइट तम माने करो हां चिल्लेइबाटा फंडामेंटल राइट की आपण कौन कहूली हमको लगे गाड़ी करुँच यार तुम मैंने एमती मत कौ ना छाड़ हवास जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस काई जीएसटी आपनकर केबे इंट्रोड्यूस हेतिला 1000 सॉरी 100 रे आपनकर कोन हेतिला लैंड रिफॉर्म्स हेतिला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आपनकर 1000 रे हेतिला हला सो डील हेतिला बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश तो 101 रे आपनकर हेतिला की 101 रे हेतिला टी ऑप्शन बी राइट वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को the reservation of seats for SC/ST in Lok Sabha was extended to 80 years. एटा अपन 80 years को extend करा गला. So एटा कहा according हबो? Quick. So the reservation of the seats for the SC/ST in Lok Sabha was extended to 80 years. 95th 104th कौन आंसर दोछ देखी? पंडितस माने ठीक आंसर देला कौन होउछ? ऑप्शन बी 104 देखिबा वेरी गुड सो 104 2020 रे गाइस आपनकर चेंज है कि केते हे जाई छी ना एक्सटेंड करा जाई छी 80 इयर्स को हैला को पर्यंत ना 2030 पर्यंत एरा एक्सटेंशन छ नेक्स्ट मते को अंडर व्हिच अमेंडमेंट वाज द नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी bifurcated into two separate bodies the bifurcate है two separate body रे को अमेंडमेंट अकॉर्डिंग 79th amendment 89th amendment 19th amendment और 91st amendment कौन कहउछ ऑप्शन 89 पक्का ओ चलो ऑप्शन बी द 89th constitutional amendment act 2003 bifurcated आपनकर national commission for the scheduled caste article 338 रे then article 338 a रे आपनकर for scheduled tribe हे next questions मते को the 56th amendment 1987 conferred statehood on statehood कथा कहिले आपण माने रिलेट कहा को करबो कहितली जते बेले ऑल बी हबो मैम हो आजा जते बेले स्टेटहुड कथा कहूची 56th अमेंडमेंट कोन कहूचो मिजोरम कथा कहितली मिजोरम कथा बट एठा हमर का राइट आंसर हे जछि कोन ना गोवा देखिए कोन हेची ना द 56th constitutional amendment act of 1987 conferred the statehood on Goa making it the 25th state of the Indian में कोठो आसीतिले किए शासन करथले तांको हम आनिले हां रिलेट करो क्लास आउरी अच्छी आपनकर सॉरी ने पर्यंत व्हिच अमेंडमेंट एम्पावर्ड द सेंटर टू लिवाई सर्विस टैक्स तो सर्विस टैक्स कथा पढिलसला मते को सर्विस टैक्स कथा पढि आसिला क्विक 80th अमेंडमेंट 88th अमेंडमेंट 92nd अमेंडमेंट 95th अमेंडमेंट आउ दी तीनटा क्वेश्चंस अछि सिला सादो जे मते को व्हिच अमेंडमेंट एम्पावर्ड द सेंटर टू लिवाई सर्विस टैक्स कोन हबो quick option B 88th amendment so 88th constitutional amendment act 2003 empowered the center to levy service tax inserting article 268a related to the service tax next mate ko the 31st amendment 1973 31st amendment 1973 increased the Lok Sabha seats from 52 525 to kete he jaichi 545 obviously apanakar change heichi so the 31st constitutional amendment act में 1972 रे 525 ରୁ 545 हे जाइछि so which amendment allows for the appointment of the same person as governor for two or more state at a time जणे गवर्नर आपनकर दीटा और तीनटा स्टेट्स रे आपनकर सॉल्व करि परिबे तो एटा को अमेंडमेंट अकॉर्डिंग फर्स्ट 7th 12th और 15th हेछि क्विक को अमेंडमेंट अकॉर्डिंग सॉरी क्वेश्चंस ना सॉरी जीबे लास्ट क्वेश्चन एटा तो एटा आपनकर राइट आंसर कोन द 7th constitutional amendment act 1956 according it facilitated the appointment of the same person of governor for two states more so it was all about today's session महापैक आपण मानकर 4000 रे 2 years price रे आपण माने अवेलेबल 2 years जाय आपण माने अवेलेबल करि परिबे जते ऑल वन डे एग्जामिनेशन आपनकर महापैक अंडर रे पळे आसीबो 8280532825 को कॉल करि परिबे एल्स आपण माने मते भी कांटेक्ट करि परिबे WhatsApp करि परिबे 9124730510 okay so Deepta GK network you can follow me over my Insta and
scan this telegram channel join heisa Vedant classes ra join hejiba पुळे क्वेश्चन सॉल्व कले आज देखिए तुम मैंने केतिकी बुझीज सॉल्व करवा मु सब बिलीव करे कि 20टा क्वेश्चंस कर 30टा क्वेश्चंस कर बट से इनफॉरमेशन मु प्रोवाइड करी मत सैटिस्फाई लगे बट स्टिल देखिबा तुम मानकर कोन लागुची जेतिकी आज पढेली तुम मानक मुंडरे अछि ना बाउंस रे जाछि चलो thank you guys thank you so much have a good night take care of yourself what fast up do prioritize your parents this will be your first priority no one else in the world thank you so much